वास्तविक भी नजर नहीं आ रहे। Before we start our 38th PMA webinar, I would like to request Professor Rashid to start this webinar with the name of Allah Almighty. So Rashid, over to you. Right. Thank you, Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله العظيम. तर्जुमा. तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब नाजिल की और इसमें कोई कजी ना रखी बल्कि ठीक सीधी उतारी ताकि डर सुनाए उसकी तरफ से अजाब है और मोमिनों को खुशखबरी दे जो अच्छे अमल करते हैं कि उनके लिए अच्छा अजर है. सदक़ल्लाहु अज़ीम. Now I would like to start the 38th PMA webinar, the topic of which is how do I diagnose fungal infection, improving fungal culture yield. I would like to request Dr. Muhammad Zishan. He is assistant professor and consultant microbiologist at Aga Khan University Hospital. Sir, over to you, sir. जी, thank you very much. आपको मेरी आवाज am I audible? Assalamu alaikum ji. Thank you, Dr. Zishan. जी, Dr. Salma, thank you are you. an assistant professor and a consultant microbiologist at Aga Khan University. I want to tell participants, and we are very grateful to you for your webinar today. Thank you. Thank you, Dr. Salma. So, am I audible, Vadi? And my screen is visible? Yes, you're very much audible, and Dr. Kaisar Sajjad is soon joining the webinar, so he'll also extend his welcome to you. No Thank problem. you, Zishan. No problem. My pleasure. So I don't know मेरे participant कौन हैं, but मुझे जो तस्वीरों से लग रहा था मेरे सारे seniors हैं, तो thank you very much for listening, a junior person, and I will try to summarize the things as effectively and as easily as it be possible for me. I hope fungal infections हम सब उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे हम लोग हमारा interactions हो रहा होता है as a clinician, as a pathologist. So in our experience and overall in the global experiences, the proportion of the fungal infection is gradually increasing. It's very much increasing, and now initially what we thought that it's only bacteria who cause infection, but we have seen that it's over the time viruses and fungal has replaced some bacteria, and the fungal infections, diagnosis of fungal infection is as important as bacterial infection because some of them are really notorious and very, very dangerous, and it should be properly diagnosed. I mean, laboratory diagnosis before treating it. So हमारे experiences में इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं कि just before going to session, I just want to give an example जो अभी पिछले दिनों मेरे साथ हुई during reporting, and just a small scenario है जिससे मैं start करूँगा, and then I go to a formal session. So there's a lady. I receive a sample of a lady who's around young lady in mid-30s, and I found that his pus aspirate, in which it was growing Aspergillus fumigatus.
I thought it could be contaminant or it could be something else. So I repeat from the specimen, I repeat the um, process, and I see the fungal smears, and I found the fungal hyphae in it. And when I went back and asked the history of the patient, it was really very interesting. To share this interesting history, in August 2021, this young lady has a toothache. For that, she went to GP, and that GP give him some intramuscular injection, and after that injection her toothache resolved, but after 3 weeks she developed an abscess on left deltoid region. She went to GP, another GP, and that GP drained that pus, and she get cured, and she received some antibiotics. जीशान, ये इंजेक्शन एब्सेस था जो आपने बता रहे हैं? Exactly, sir. This was injection abscess. अच्छा, So ठीक है. after 1 month, she again got infected, and she went to another GP. He again did the same thing, incision and drainage, and give antibiotics. And this happened 4 times, like August, September, October, November. In November, she went to a consultant, and that consultant did the complete curettage, surgeon, and she sent the wall of the abscess for histopathology. Only histopathology, no fungal culture, no any sort of cultures. And on that histopathology, they give the granuloma suspected of TB. Without doing any TB cultures, and she was started on ATT in January 2022. She was started on ATT in January 2022, and just after 1 week, just after 1 month, she again developed same abscess, and now her liver failure develops also, because the ATT cause her the liver failure. Again, that lady went to that same surgeon. Now she did all the curettage and the debridement, and now she sent sample only for bacterial culture, not for TB culture again, not for fungal culture again. And in that culture, I found fungus. So I asked the lady to go to the primary histopathology reports and ask them to do some deep dissections and more slices of that block, and check whether the fungus is present in that. It might be possible that after so much incision and drainage, there might be some inoculation from any surgeon of this fungal. So I was worried that ये TB भी हो सकता है, but कहीं doctor ने इसको inject ना कर दिया later on after incision. And when she went to histopathologists, and they were kind enough, they did the histopathology, take all the deep tissues, and they found the fungus in it. So I mean, all the granulomas are not TB. There must be a fungal element which we have to evaluate. And after that, she got the antifungal treatment, and alhamdulillah, after March and now it's June, we didn't receive any specimen. And this is from the outside, not from the AKU. This is from the outside, some other city. So to start with this, this scenario, I will start that how important is a fungal infection, and as a clinician, we usually ignore fungal infections. So I start formally now. So I do not have any financial relationship with any of this session. So in this session, I will try to outline the laboratory diagnostic methods of fungal infection. How can we increase the culture yield, and what are the limitations of different culture methods? And we will discuss like the clinical vignette I have discussed right now. I will give more clinical vignettes to my participant these problems, and we will try to find out the solutions from the clinician perspective and the laboratory perspective both. So like fungal infection sites, there are many, like it's not always the skin. We usually consider that's always the skin. So fungal infection could cause meningitis, like cryptococcus and candida. It could be oropharyngeal or genitourinary candidiasis or candida infections.
There are many. After post-COVID, we are seeing so many PCP, aspergillosis, and mucor, and so on. So it can affect any organ, meninges, oropharynx, respiratory. It can cause bloodstream infections. So from the round yeast-like organism like Candida and Cryptococcus, we can have a filamentous mold as well, like Fusarium. So just to add share another important scenario that we found in a transplant patient, transplant was done in very big transplant center of our country, and the young boy, he got sepsis just after transplant, and we found they sent the blood cultures in our lab, and we found Fusarium in the blood culture of that young boy. And that young boy, when we give them amphotericin B and prolonged amphotericin B, he got cured, mashallah, and now he's okay now. So usually what we thought that bloodstream infection is usually round yeast, secondary to round yeast or Cryptococcus, but we must think that Fusarium, which is a filamentous mold, is an important bloodstream causing infection, fungus causing infection. Apart from these invasive fungal infection, we have superficial infections like dermatophytes and Candida infections of skin and toe nails, and the intra-abdominal infection. So to summarize that, we usually thought fungal is related to skin and superficial soft tissues, but it can affect any organ from meninges to intra-abdominal, and it's very serious, especially post-COVID. We are seeing so many post-COVID, this Aspergillus and PCP and mucor infections. So as a clinician, we must consider this. So this data, it was published from our center in 2017. So they have estimated the burden of fungal disease from Pakistan. So this is the estimated burden, and we can see that how grave is the situation. Like for candidemia, it's around 21 per patient per 100,000. Invasive aspergillosis, it's 5.9. Hello, आवाज जी. नहीं आ रही जी. अब आवाज आ रही है? हेलो. नहीं आवाज आ रही है, आप उसको अनम्यूट करें, अपने आवाज आ रही है. Okay. So PCP again 1.2 cases, chronic pulmonary aspergillosis, it's 70 per 100,000. So we can see the load of chronic pulmonary aspergillosis. It's very high because we are endemic TB endemic area. We have so many COPDs. And post-COVID also, and post-TB also, it's a very high rate of chronic pulmonary aspergillosis. Similarly, like in our environment, there's so much aspergillus that people are suffering from allergic bronchopulmonary aspergillosis. And similarly, severe asthma secondary to fungal sensitization and fungal keratitis. So we can see that the burden is so high. We are on very high burden country for fungal infection, and unfortunately we are unable to identify these fungal diseases. So to start with the conventional diagnostic laboratory procedures, we all know that in the laboratory we usually send for smear and cultures. Like for smear and cultures, whatever specimen we got from the patient and we suspect the fungal infection, we should send a specimen for culture and smear. Like yes, I have told in the initially that usually we thought it's a bacterial infection. We start bacterial, antibacterial antibiotics, and we do not consider that's a fungal. So whenever there's a chronic infection, please, I request that we should always we should send TB. We should send bacterial infection. Apart from bacterial infection, we should also consider TB and fungus also. And for that, a simple test is the fungal smear, in which we take the 3% KOH, and 3% KOH we see under the microscope. It's very easy. If some lab person is here, I'm not sure how many lab person is here. It's very simple and very easy and very economical test, on which you can identify this
septate fungal hyphae if there is septate fungal, or you can see the round budding yeast cells also. So it's a very simple test you can do without any more expense, increasing your expense. You can do this laboratory test ki which agar aap mangwa लें उसकी prepare कर लें तो it lasts long, बहुत लंबे तक चलती, कोई खर्चा नहीं है इसके अंदर. So number 1. Number 2, आप हमेशा हमारे फंगल कल्चर के लिए स्पेशल मीडिया होते हैं जो कि हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए. इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, यू कैन ऐड अ सिंपल प्लेट. और अगर आप बहुत ज्यादा हम फिक्रमंद हैं कि खर्चा बढ़ जाएगा तो स्पेशली हम अपनी लैब में ऐसे प्रोसीजर्स करें, या फिजिशियन अगर हैं तो फिजिशियन जो है उनको अंदाजा है कि ये क्रॉनिक केस है, सो फंगल के लिए जरूर रखें. तो लैब को जरूर इंटीमेट कर दें कि दैट यू आर सस्पेक्टिंग अ फंगल इन्फेक्शन. सो व्हाट लैब विल डू two things. If there's a resource limited lab, so they will do 2 things. Number 1, they will put an extra plate, which usually they do not do. Like in Ahan, we put an extra plate for every specimen, whether it's chronic infections and whether it's acute infection, because we do not know sometimes the history of the patient. So that's why we put a separate plate for fungal infections. But if you are resource setting, a limited setting, so you can ask your lab to put another plate for fungus, in which whole plate you inoculate the specimen, number 1, and ask them to hold it for prolonged, like 3 to 4 weeks. 3 to 4 weeks में रखना है उसको, प्लेट करके बाकी प्लेटों से दूर रखना है टेप करके, ताकि वो environmental contamination से ना हो पाए इसमें ना. So it's a very simple and very economical process when you are suspecting the fungal infection in your patient. Number 2 is the histopathology. Mostly like in chronic patient, as I mentioned in my initial scenario, like the surgeon usually they are very fond of sending histopathology. So mostly we send histopathology. It's a normal routine, but we forgot to send the culture. So sometime we miss, sometime like histopathology also has certain limitations, and that's why if we do not do a deep cut or deep dissection or blocks dissection, so there's a chance कि हम वो miss कर दें वो fungal hyphae या वो fungal element. So until unless आपके पास बहुत ज़्यादा pus cell आ रहे हैं, आपको TB भी नजर नहीं आया, ask your lab या histopathology lab to do more dissection and check especially for fungal, and they do a special stain for fungus. So इससे हमारे शायद हमारे मसला हो जाए, क्योंकि patient अगर respond नहीं कर रहा है, ATT भी respond नहीं कर रहा है, तो there's a chance कि fungal infection हो, and if they will do the deep sections, then there's a chance कि हम उसको pick कर लें. And very important, which now it's very popular because it's all these things are sometimes like histopathology and culture sometimes take invasive method. We have to take specimen from the patient through different methods like ultrasound guided or radiology assisted. So there is another very important, very significant method which we call non-culture based method, like in serum, in the other fluid, like it's very popular in serum right now. We are doing like beta-D-glucan or galactomannan assays. So these are the assays which are specific, like galactomannan assays are specific for Aspergillus infection, and beta-D-glucan is a pan-fungal serum marker which detect the level of beta-D-glucan, which is a part of their cell wall. Beta-D-glucan is a part of cell wall of the fungus. So if there's a systemic infection, we detect this beta-D-glucan level in the patient's serum. So if you have a chronic patient with candidemia, suspected candidemia, so beta-D-glucan has a very high and very good sensitivity in case of fungemia. So it's a very easy test, but it required expertise and required certain gadgets which should be present in the laboratory, and it requires infrastructure and all these things. And last but not least, the MALDI-TOF, which has changed the scenario of the microbiology. So these are the conventional tests. Now it's this non-culture based test is again become a conventional diagnostic method. So it's very old now, and we are doing, and it's very useful now. So fungal culture, direct and conclusive means of establishing fungal infection. So summary है कि fungal culture की जरूर consider करें, which is a direct and conclusive means of establishing fungal infection. So अगर हम conventional diagnostic laboratory की बात करते हैं, तो जैसे हमने कहा कि smear and culture is the must, and easy to sampling से अगर बात करें तो blood, sputum, ये
ये इस तरह के हम हालांकि स्मेयर हम इन स्पेसिमेन से हम बना सकते हैं, ले सकते हैं, ब्लड कल्चर हो सकता है फ्रॉम एनी स्पेसिमेन, from any tissue. Like if we have an ENT surgeon, so you can send the nasal tissues if there's a polyp, in case of superficial skin. So हम easily इन सब का वो बना सकते हैं, and biopsy and is the most difficult sample to get. And the smear and culture we can get easily from all these specimens. So fungal culture has certain limitation, like it takes time, definitely. When we grow fungus, it takes time. Sometimes it takes at least like candida takes around 48 to 72 hours to grow in the lab. And similarly fungus aspergillus, it grew within 24 hours, especially mucor, but some aspergillus it takes time, like 48 to 72 hours. And there are some certain slow growing molds which cause chronic deep infection. It take more than 4 weeks. So we have to be very patient. There's just like TB, we have to be very patient in fungal culture. It takes around, sometimes it takes around more 4 weeks also. So if you are suspecting, so we have to be very patient and intimate your lab to keep the plates, if you are inoculating the fungal plates, for more than 4 weeks. And उसको बड़ा प्यार से, बड़ा एहतियात से रखना पड़ता है कि environmental contamination ना हो जाए, इसको टेपिंग करनी पड़ती है, मीडिया डिहाइड्रेट ना हो जाए, इसको रेगुलरली देखना पड़ता है. ये नहीं कि हमने रखा और 4 हफ्ते बाद अब देख रहे हैं इसको. So the sensitivity and yield depends upon multiple things, like how the specimen is collected, what culture media you have inoculated, and technologist skill also. So it's very important that how the specimen is collected. आपने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया है कि नहीं लिया है. अगर डीप टिश्यू है तो हमने वो उस टिश्यू को जो इन्फेक्टेड है इसको टच किया है कि नहीं किया है. आपने स्पेसिमेन भेजते वक्त लैब में कोई डिहाइड्रेट तो नहीं हो गया, क्योंकि इट्स वेरी फ्रेजाइल. अगर डिहाइड्रेट हो गया सो हम उसको ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएगा फंगस. तो हमें अंदर सिलाइन, अंदर स्टेराइल सिलाइन इसको भेजना है. एंड अगर लैब में आ गया तो हमने जो हमारा लैब का बंदा है उसको प्रोसेसिंग कैसे कर रहा है. अगर हमने इसको गोश्त की तरह चॉप कर दिया तो देयर इज अ चांस कि हम इसके सारे फंगल हाइफी को, अगर फंगल हाइफी है इसको, तो हम उसको मिस कर देंगे. और अगर हमने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, अगर सैंपल आता है लैब पे, जो टेक्निकल स्टाफ अगर इस वक्त है उनको देखना चाहिए कि अगर टिश्यू आया, डीप डिब्राइटेड टिश्यू आया, तो वो कोई वहाँ पे कोई फंगेटिंग या ऐसा की या नेक्रोज एरिया तो नहीं है. तो हमें नेक्रोज एरिया को टच करना है, उसको इनोकुलेट करना है प्लेट में ना, सही ना. और हमें सुपरफिशियल इसको इनोकुलेट नहीं करना है. सो लॉन्ग प्रोसेस, हम इसको अलग से सेशन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं. इसको हमें एम्बेड करना है टिश्यू को, क्योंकि उसको एम्बेड जब करेंगे टिश्यू को मीडिया के अंदर तभी वो ग्रो करेगा. सुपरफिशियल अगर उसको छोड़ देंगे तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो फंगल एलिमेंट जो होंगे ना वो अंदर टिश्यू के अंदर घुसे होंगे. Again, what culture media we have selected and how long we have incubated and what are the incubation conditions. These are very important. अगर हम एक हफ्ते के अंदर 4 दिन के अंदर इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया जो नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह करते हैं, तो there's a chance कि we miss it. So हमें इसको prolong, sometimes 3 weeks, sometimes 4 weeks. So there must be close liaison between the microbiology laboratory and the clinician, that if you have a high suspicion of a fungal infection, you must intimate your lab and have a close liaison कि क्या grow कर रहा है भाई, मुझे बताएं. And last but not the least is the technology skill. टेक्नोलॉजिस्ट कितना स्किलफुल है उस चीजों को देखने के लिए. कंटेमिनेशन हो गई, इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन हो गई, तो वी कैन मिस दैट. सो द गुड द स्पेसिमेन, we have a good sensitivity and yield. The more culture plates you have inoculated and long incubation condition, the more yield you have. And the technologist, the more skilled technologist, the more yield we have. So another very important thing is the we can improve the yield. जैसा मैंने बताया कि clinician is very good clinical assessment. जो हमें जरूर, हमें टीबी या बैक्टीरिया के अलावा हमें क्लिनिकल एस्पेक्ट फंगस के भी सोच चाहिए. फंगस भी हो सकता है. हमने प्रॉपर स्पेसिमेन कलेक्ट किया है कि नहीं किया, एडिक्वेट सैंपल क्वालिटी थी कि नहीं थी, कल्चर रिक्वेस्ट हमने डाली थी नहीं डाली थी, पता हमें, जैसे मैंने बताया था ना, बैक्टीरियल कल्चर के लिए भेज दिया था, टीबी कल्चर के लिए भेज दिया, फंगल सोचा ही नहीं. So some labs do fungal culture, some miss it, and the specimen transport, आपने किस तरह ट्रांसपोर्ट किया है. So it's from the your end, clinician end, कि हमारे पास किस तरह का सैंपल आ रहा है, अगर हम इस बेहतर कंडीशन में भेजेंगे, then the lab will do specimen processing appropriately, proper culture media inoculate करेंगे, incubation condition and duration proper होगी, and हम लोगों को train भी कर सकते हैं. So it's not a one-way traffic, it's a two-way traffic, and whatever the clinician will guide us, we will process the specimen accordingly. So now I start with another very important scenario.
I don't know how many participants we have. If someone want to answer, it's very good for me that हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा active participation हो जाएगी. Like say 24-year-old male. He was admitted in ICU and now it's day 15. His initial presentation was intestinal perforation, laparotomy and repair. Laparotomy and repair was done and central line was placed. In microbiology culture updates, he has a multi-drug resistant Acinetobacter, tracheal aspirate, and MRSA and surgical site infection. For that, we give meropenem, colistin, and vancomycin. So they have Candida species in abdominal fluid for which they have got the fluconazole. Current temperature is 40 degrees Celsius and TLC is 25. So हमारे पास क्या था, हमारे पास एक सेंट्रल लाइन प्लेस है, हम यहाँ आ रहे हैं, तो हम प्लान हमारा क्या हुआ कि ये probably it could be invasive candidiasis and we send blood cultures and beta D-glucan in this scenario because 15 दिन हो गए थे ICU में, perforation थी, central line place, there's a high chance MRS से आ रहा है, so सारे risk factors थे for invasive candidiasis. We asked them to do a blood cultures and a beta D-glucan which has a high sensitivity than the blood cultures. So ये हमारा रिक्वेस्ट थी, अगर हम रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे तो there's a chance कि हम we miss the blood fungemia and blood culture. So we request blood cultures, aerobic bottle we receive and volume 6 ml, incubation 5 days and no growth. हम grow कर ही नहीं पाए उसमें. So क्या scenario होगा यहाँ पे कि हमारे पास blood culture हमने भेज भी दिया, हम high suspicion था blood में हमारे के fungemia होगा. So what are the limitations in which we did not grow any yeast here? Although हमने fungal में हमें fungus भी start कर दिया, antifungal भी start कर दिया. So any idea? Anyone can participate? कि क्या हुआ क्या होगा? हमने क्यों नहीं grow किया Candida in this scenario? So हमारे पास yield क्यों नहीं आई? हमने इसमें फंगस कल्चर रिक्वेस्ट नहीं की हुई थी. ब्लड कल्चर जरूरी 5 days में हम रिपोर्ट आउट कर देते हैं. Candida in blood cultures takes time, so it takes sometimes more than 1 week, like up to 21 days. So if we have a high suspicion of candidemia, so we should write in the blood culture that this patient has candidemia, and we should write to do a fungal culture. We do not charge, they do not charge separately. Like patient कोई होता है ना fungal culture के लिए अलग charge करेंगे, उसी blood culture जिसमें हमने routine bacterial culture देखना था, उसमें आप कह दें fungal cultures, single bottle की जगह 2 bottle भेज दें, appropriate volume हम उसमें डाल दें 8 to 10 ml, and ask them to incubate, ask lab to incubate for 21 days. So they will not charge separately for fungal culture as far as Khan Hospital is concerned. So we do not charge separately. But what we will do that routinely we incubate for 5 days, but we extend the incubation duration on the machine for 21 days. So 21 days के बाद हो सकता है 6वें दिन में, 7वें दिन में, 8वें दिन में अगर हमने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हुई है तो वो 7वें 8वें दिन में ग्रो कर जाएगा, एंड देयर इज अ चांस कि हम उसको लेबल कर सकें कि हाँ इन्वेजिव कैंडिडीमिया हुआ था. बिफोर दैट हमने बस एम्पेरिकली एंटी फंगल इसको स्टार्ट कर दी थी, हमें खुद नहीं मालूम कि हमने इसको कब तक देनी है, किस हद तक देनी है. So there are different methods of doing the blood cultures. Some lab do manual blood cultures, some do automated continuous monitoring blood cultures. It depends कौन से area में हम काम कर रहे हैं. So if you are doing manual blood cultures in your laboratories, you can do the same things. And for continuous monitoring blood cultures, we can ask the lab, जैसे मैंने बताया कि हम 21 दिन के लिए incubate कर सकते हैं, and they automatically beep, like कोई positive आया तो automatically beep कर देगा कि हमारा positive आ गया. तो ये तो एक बहुत ही हॉस्पिटल बेस्ड सिनेरियो था जिसमें हमें कैंडिडीमिया के लिए हम बात कर रहे थे, हाई रिस्क पेशेंट का. सो अब नाउ हम एक रूटीन में जो हमारी कम्युनिटी में इन्फेक्शंस होते हैं, सो देयर इज अ 40-year-old wife, a housewife, who works on chula with so much garmi around her. So now she presented with red, round, itchy rashes on neck like this. हमने क्या किया, हमने इसको इंटरवेंशन किया, स्किन स्क्रैपिंग कलेक्टेड इन हमने क्या किया, अनस्टेराइल कंटेनर में भेज दिया स्किन स्क्रैपिंग लेके. एंड माइक्रोबायोलॉजी में पता ही नहीं था कि स्किन स्क्रैपिंग किस मकसद के लिए आई है, एंड वी इनोकुलेटेड ओनली ऑन द शिबलेट एगार एंड सेबेरॉड डेक्स्ट्रोज एगार इज अ फंगल
which is a fungal culture plates. Initially, जैसे मैंने बताया कि हम स्मेयर देखते हैं, स्मेयर वाज नेगेटिव एंड कल्चर पे कोई ग्रोथ भी नहीं आई, डर्मेटोफाइट की कोई ग्रोथ नहीं। ऑल्दो हमें अगर क्लिनिकल देखें तो इतनी जबरदस्त इसको फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन हम ग्रो भी नहीं कर पाए। उसकी जगह क्या ग्रो कर गए, स्किन फ्लोरा ग्रो कर गया और सेप्रोफिटिक मोल्ड यानी कि जो एनवायरमेंटल मोल्ड है वो कर गया। तो हमने पेशेंट जो कि बहुत ही क्लिनिकल सस्पिशन हाई था, हमने उसको मिस कर दिया। ऑल्दो हमने प्लेट भी लगाई थी यहाँ पर, लेकिन हमने मिस कर दिया। हमारे इसमें भी कुछ ग्रो नहीं किया, हमारे डर्मेटोफाइट्स भी ग्रो नहीं किए, जो कि इंपॉर्टेंट है। पूरा सेप्रोफिटिक मोल्ड और इस तरह की चीजें ग्रो कर गई। वजह क्या होगी? So in this situation, if we want a high yield, like as a clinician, I want that dermatophyte grow कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। So हमें क्या करना है कि हमें स्टेराइल कंटेनर में भेजना है, हमें अनस्टेराइल कंटेनर में नहीं भेजना है। या आप जो पेट्री प्लेट्स आप लैब से मंगवा सकते हैं, उसको वो स्टेराइल होती हैं, उसमें हम भेज दें, क्योंकि हमने इससे पहले अनस्टेराइल कंटेनर भिजवाया था तो एनवायरमेंटल मोल्ड उसमें ग्रो कर गए। देयर शुड बी स्टेराइल कंटेनर जिसमें आप स्पेसिमेन को कलेक्ट करें। लीडिंग एजेस ऑफ द रैश वाइप विद 70% अल्कोहल। तो ये फंगल इन्फेक्शन के ये लीडिंग एजेस थे, इसको पहले आप वॉश कर लें, वाइप कर लें 70% अल्कोहल से। उससे फायदा क्या होगा, जो एनवायरमेंटल मोल्ड, सुपरफिशिएंट स्किन फ्लोरा होगा वो मर जाएगा। अल्कोहल से 70% अल्कोहल से वो इतना इफेक्टिव नहीं होती है फंगस की। तो हम देखें अगर उसके बाद हम मोल्ड इस तरह स्क्रैपिंग करके उठाएंगे, इस तरह ये सब उठा रहे हैं यहाँ से, तो उसकी यील्ड बेहतर होगी। We should select more, we should use more selective plates जिसमें एंटीबायोटिक ज्यादा हो, तो बैक्टीरियल लोड को इनहिबिट कर दें, लाइक माइकोसेल में क्लोराम्फेनिकोल होती है। ये डर्मेटोफाइट टेस्ट मीडियम है, इसमें भी एंटीबायोटिक्स होती है, तो हम इसको उसमें इनोकुलेट कर दें ताकि जो बैक्टीरियल या एनवायरमेंटल फ्लोरा है वो इनहिबिट हो जाए। हमें बस इसको एम्बेड नहीं करना है, हमें डायरेक्टली इसके सरफेस पे डालना है, प्रेस स्लाइटली ऑन द एगार सरफेस ताकि वो एम्बेड हो जाए इसके अंदर ना। तो ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, अगर कोई टेक्निकल स्टाफ हमारे मौजूद है यहाँ पर इस वक्त, हम उसको भी हैंडल कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ना कि सरफेस पे ना छोड़ें इसको, जो भी स्क्रैपिंग है उसको हल्का सा अंदर एम्बेड कर दें मीडिया के अंदर, तो उसकी यील्ड बेहतर हो जाएगी। और हम ये नहीं कह रखे हम भूल जाएं, उसके बाद 4 हफ्ते बाद देखा उसमें कोई एनवायरमेंटल ग्रोथ आ रही है, हम उसको रेगुलरली प्लेट को एग्जामिन करें फॉर एनी, अगर स्मॉल सी भी ग्रोथ आ रही है कोई डर्मेटोफाइट्स की, उसको हम उसको आइसोलेट करके और उसको फिर एग्जामिन करें अंडर द माइक्रोस्कोप। तो एक तो ये बड़े ही कॉमन हमारे सिनेरियो था जो कि हम अक्सर मिस कर देते। हम मोस्टली हम लोग देख रहे होते हैं हमारे सॉरी जी जी अभी आ रही। आई एम सॉरी, ये बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था किसी वजह से, आई एम सॉरी, मैं इसको दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी। जी जी आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन आप शेयर हो रही है जी, बिल्कुल हो रही जी है। जी, ओके ओके आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है। ओके जी, सॉरी। ये डायबिटिक फुट की हम बात कर रहे थे, डायबिटिक पेशेंट की बात कर रहे थे जो फेशियल स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट किया था। वी नो दैट्स अ फंगल राइनोसाइनोसाइटिस। वी डिड द फंगल एंडोस्कोपी, फेस किया, डिब्राइटमेंट की, एंड वी सेंट फॉर हिस्टोपैथोलॉजी एंड कल्चर of debrided tissue. On microbiology, we found the aseptate fungal hyphae, which denote that there's a mucor. And there's but on culture we didn't found any growth of fungus, and there's a heavy growth of Staph aureus on blood agar. So हुआ क्या? So probably यहाँ पे aseptate hyphae हमने देखे थे, तो ये mucor होगा, and mucor is very sensitive to अगर उसकी अगर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ अगर इसके साथ हो रही है तो वो उसको इनहिबिट कर देगी। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हमने जब उसको प्रोसेस किया है इन द लैब, वी मिस दैट वी डिड
लॉट्स ऑफ चॉपिंग ऑफ द टिश्यू, लाइक हमने जो फेस करके जो डिब्राइडेड टिश्यू है था उसको बहुत ज़्यादा चॉप किया. चॉप करने से क्या हुआ कि जो म्यूकरेशियस मोल्ड की ग्रोथ भी इनहिबिट हो जाती है. कि म्यूकरेशियस मोल्ड जो है वो इट रिक्वायर्स, इट्स वेरी डेलिकेट और बॉडी फ्रिजाइल होता है, तो अगर हम इसको बहुत ज़्यादा इसको चॉप करेंगे इस टिश्यू को, तो वो गोल्ड मोल्ड की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी. सो हमें क्या करना है, अपने टेक्नोलॉजिस्ट को बोलना है कि इसको बहुत ज़्यादा चॉप ना करें, जो टिश्यू भेजा है उसको हल्के से जो डिब्राइडेड एरिया है या जो नेक्रोज्ड एरिया है उसको आप इम्बेड कर दें मीडिया के अंदर. स्कैल्पल प्लेट से इसको हम उठा के हल्के से डिप करके उसको कर देंगे. और हम ऐसी मीडिया प्लेट लेंगे जिसमें एंटीबायोटिक हो, ताकि जो ग्राम पॉजिटिव या इस तरह की चीज़ें वो इनहिबिट हो जाएं. सो आई थिंक ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे. स्मोकर में वायरल नमूनिया नहीं, ये वही सिनेरियो चल रहा है पीछे. So, in other scenarios that a known HIV patient presented with prolonged headache and altered mentation, we did the lumbar puncture and sent for culture antigen testing. So in that we found the CSF cryptococcal antigen, its dilution of 1:5, and the CSF culture grow nothing. Again, cryptococcal suspect कर रहे थे HIV meningitis है, culture growth नहीं आई, लेकिन हमने साथ में फॉर्चुनेटली एंटीजन भेजा था जो कि डाइल्यूशन पॉजिटिव आ रही थी उसकी. सो प्रॉब्लम क्या हुई कि हमें यहाँ पे हाई वॉल्यूम चाहिए था, हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए था, जो कि वॉल्यूम हमें जिससे हम बेहतर यील्ड कर सकें. तो अगर सस्पेक्टेड CSF मेनिंजाइटिस क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, तो हम वैसे ही उसकी थेरेप्यूटिक टैपिंग करते हैं और उसके बाद हम उसको भेजते हैं. तो हम जितना मैक्सिमम CSF भेज सकते हैं उसको भेजें ताकि उसकी यील्ड बेहतर सके. लैब की अगर बात करें तो अगर हमने विदाउट सेंट्रीफ्यूगेशन इसको लगा दिया तो there's a chance कि हम मिस कर देंगे. And another very important thing is that cryptococcus grow very slowly, so it's a slow growing organism. So अगर हमने इसको 48 hours या 72 hours पे इसको हमने डिस्कार्ड कर दिए प्लेटें और हमने देखा नहीं फर्दर, there's a chance कि मिस कर दें. तो when there's there's suspected cryptococcus, so make your laboratory like उनको लाजिम करें कि वो थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए रखें, 4 to 5 days के रखें, ताकि आप उसकी बेहतर यील्ड बेहतर कर सकें. अगर स्किन के लोग हमारे मौजूद हैं, अगर स्किन में लोग हैं, तो उनको इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्रॉनिक फुट वुंड था. एक 40 साल का फार्मर था जिसके हाथ में कुछ कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई थॉर्न लगा था, और नाउ उसका करते कराते, ये रियल सिनेरियो है जो कि इस तरह का हाथ उसका सिनेरियो उसका डेवलप हो गया है, जहाँ ये देख रहे हैं मल्टीपल साइनसेस डेवलप हैं और यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं. ये डिफरेंट हॉस्पिटल्स में अपने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे या अपने इलाके के जो BHUs थे वहाँ जाता रहा, जहाँ पे इसको मल्टीपल एंटीबायोटिक्स देखे हैं इसको ना, बट ये सही नहीं हुआ इसका ना. And now they came to Karachi and with this hand. In Karachi, we did the deep debrided tissue, debridement of the tissue, and sent for bacterial and fungal culture both. Like in this container, इस container हमें नजर आ रहा है कि हमने इसको भेजा है. So अगर हम देखें इसमें बहुत सारी तो हम देखें ये टिश्यू यहाँ भेजा गया था इस तरह करके. And what we found, the smear is positive for septate hyphae, but there was no fungal growth we have seen. Again, क्यों नहीं यील्ड कर पाया? क्योंकि हमने क्या किया होगा, कुछ हमारी गलती होगी, हमने 6 हफ्ते तक भी रखा तब भी ग्रो नहीं किया इसने. So हमने क्या करना था इसमें, हम ये हाई रिस्क पेशेंट था फॉर माइसीटोमा, जो कि हमने मेंशन नहीं किया. हमने जब डिवाइड किया, हमारे फिजिशियन ने या क्लिनिशियन ने, सर्जन ने सब उसको डिवाइड किया, तो उन्होंने मेंशन ही नहीं किया कि ये कितना पुराना वो था. हमने इसको 4-6 हफ्ते में हमने इसको आउट कर दिया. बट इफ दिस वाज सस्पेक्टेड माइसीटोमा, तो हम क्या करते, जब स्पेसिमेन आया था तो हम उसमें जो ग्रेन्स होते हैं उसको सर्च करते हैं, जो ग्रेन्स माइसीटोमा ग्रेन्स होते हैं. और अगर ग्रेन्स हमें जो कि माइक्रो कॉलोनीज होती है माइसीटोमा की, अगर वो हमारे पास सबमिट किया होता, उसको स्पेसिमेन में होता, वो डीप एम्बेडेड होते, तो उसको वॉश करके उसको हम अपने मीडिया पे लगाते ताकि बेहतर यील्ड होती. तो हमने शायद सुपरफिशियल टिश्यूज का इनोकुलेट कर दिया, जिसमें हमने मिस कर दिया. सो व्हेनेवर वी सेंड, we should ask the lab कि ये हम हाई रिस्क या सस्पेक्टेड माइसीटोमा है. हमने फंगल कल्चर के लिए भेजा, लेकिन हम माइसीटोमा सस्पेक्ट नहीं कर रहे थे इसके अंदर, या हमने नहीं भेजा था. सो हमने क्या किया, जो ग्रेन्स ये निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ब्लैक ग्रेन्स, ये बिल्कुल चने के दाने की तरह, बिल्कुल राई के दाने की तरह के ग्रेन्स होते हैं, जो कि हम शायद मिस कर दें, हम नजर ना आया हमें ना. तो हम इसको सिलाइन से वॉश करके, इसको क्रश करके हम बड़े आसानी से इसकी यील्ड बेहतर कर सकते हैं. सो यहाँ बॉटलनेक क्या थी कि हमने नेक्रोटिक एरिया को टच नहीं किया था, हमने उसको एम्बेड नहीं किया था, हमने ग्रेन मिस कर दिए थे.
जो कि बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर कल्चर यील्ड के लिए। और अगर हम उसको वॉश करके लगाएंगे तो बेहतर यील्ड हो सकती है, एंड उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेट में लगाएं ताकि हम उसको बेहतर कर सकें, स्पेशली एंटीबायोटिक सेलेक्टिव मीडिया में। आई थिंक द सिक्स सिनेरियो क्या है कि ये भी अगेन हमारे पास एक स्मोकर है विद 65-year-old smoker with this cavitatory lesions, exhibition of COPD. प्रीवियस कल्चर हमारे पास आते रहे हैं, इसमें हम सुडोमोनास एरिजिनोसा, हेमोफ्लस, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, ये सब जो नॉर्मल चीजें थी हम रिपोर्ट करते रहे थे। Now we send a specimen, and good thing the pulmonologist did that he asked for galactomannan beta-glucan, which I initially told that it's a non-culture based method, and जिससे हम लोग बेहतर yield fungal yield की identification कर सकते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा था कि हमारे पास हीमोफिलस की ग्रो कर रहा था, बट अगर हमने देखा यहाँ पर कि ग्लैक्टोमेनाइन जिसका कट ऑफ होता है 0.5, जो कि एस्परजिलस के लिए स्पेसिफिक है ग्लैक्टोमेनाइन, वो उसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा आ रही थी, 0.5 से ज्यादा आ रही थी, 0.7 आ रही थी। सिमिलरली बीटा-डी-ग्लूकैन जो पैन फंगल मार्कर है, उसकी वैल्यू जो 80 तक होती है नॉर्मल, वो भी हाई आ रहा था। तो हमारे इन दिस प्रेजेंस ऑफ दिस कैविटी COPD एसेसोपेशन जिसमें फंगल ग्रो नहीं कर रहा है, हाँ बस बैक्टीरिया ही ग्रो कर रहा था, जो कि हम फंगस को नहीं कर पा रहे थे आइडेंटिफाई। सो ग्लैक्टोमेनाइन और बीडीजी ने यहाँ पे हमारी जिंदगी आसान कर दी। तो हमने इससे पहले जितने भी सैंपल देखे वो कल्चर बेस्ड थे एंड स्मेयर बेस्ड थे। ये नाउ हमें पता चला कि क्रॉनिक पल्मोनी एस्परजिलोसिस में नॉन कल्चर बेस्ड मेथड भी बड़े सिग्निफिकेंट है और बहुत इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट। On the basis of this beta-D-glucan and galactomannan, we identify and we label this as pulmonary aspergillosis. और अगर हम कल्चर यील्ड को बेहतर करना चाहते हैं तो हम क्लिनिकल डिटेल्स जरूर लिखें कि ये है, इस तरह के लीजन्स हैं, पेशेंट को टीबी था, स्मोकर एंड सो ऑन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हमें पता चल जाएगा कि देयर इज अ चांस ऑफ फंगल इन्फेक्शन। एंड देन वी in this scenario, if patient has given the sputum or if the pulmonologist has did the bronchoalveolar lavage, so हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा प्लेट लगाएंगे विद हाई वॉल्यूम, यानी कि हम हाई वॉल्यूम से क्या मराद है कि पेशेंट में जितना भी स्पेशल दिया है इनोकुलेट कर देंगे होल सोल, उससे ये पल्मोनरी एस्परजिलोसिस की बेहतर जाती है, लाइक 1 ml हम पूरी प्लेट में इनोकुलेट कर देंगे एंड देन वी इंक्यूबेट इट फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। तो इस तरह हम उसकी यील्ड को बेहतर कर सकते हैं। So on this scenario, like I try to summarize the things because it's a long topic, but मैं जो उसको मैंने 6-7 सिनेरियोज जो भी देखे, उसमें मैंने कोशिश की कि जो स्किन इन्फेक्शन है इसको भी देख लें, जो डीप इन्फेक्शन है इसको भी हम देख लें, और हम जितना मैक्सिमम अपनी यील्ड को बेहतर कर सकते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें करनी चाहिए एज अ क्लिनिशियन। लास्ट स्लाइड में हम ये इसको समराइज कर लेते हैं कि क्लिनिशियन मस्ट डू, नहीं, कुछ जिम्मेदारियां क्लिनिशियन की हैं, कुछ जिम्मेदारियां लेबोरेटरी की हैं। क्लिनिशियन की जिम्मेदारियां क्या है कि दे मस्ट डू पॉसिबल मेंशन पॉसिबल क्लिनिकल डायग्नोसिस और ऑन रिक्वेस्ट स्लिप, जो डायग्नोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं वो आप ज़रूर हमें लिख के भेजें ताकि हम उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, हम उसको उस तरीके से प्रोसेस करेंगे। नंबर 1, सो हमेशा हमारे जहन में ख्याल होता है कि कल्चर के लिए तो भेज रहे हैं तो फंगल कल्चर भी हो जाएगा इसके अंदर, ऐसा नहीं होता है। फंगल कल्चर की प्रोसेसिंग की अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसके अलग प्रोसेसिंग मेथड्स होते हैं। सो आपने अगर कल्चर के लिए भेजा है तो हम सस्पेक्ट, हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि इट्स ओनली बैक्टीरियल कल्चर, वी विल नॉट सेट फॉर फंगल कल्चर। ये कि मैं आखान में अलग बात कर रहा हूँ क्योंकि आखान में हम लोग एक पेशेंट यील्ड को बेहतर करने के लिए हम अलग से फंगल कल्चर जरूर प्लेट लगाते हैं, बट ऑन अदर लैब्स देयर इज अ चांस कि वो मिस कर दें फंगल कल्चर। सो क्लियरली मेंशन कि यू हैव सस्पिशन ऑफ फंगल इन्फेक्शन आल्सो। 2, प्रॉपर स्पेसिमेन कलेक्शन, एडिक्वेट वॉल्यूम एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने स्पेसिमेन कहाँ से लिया है। अगर नेक्रोज्ड एरिया है हमने वो मिस कर रहे हैं तो देयर इज अ चांस कि हम मिस कर दें। सो अगर हम डीप डिब्राइडेड एज अ सर्जन कर रहे हैं तो हम जितना डिब्राइड कर सकते हैं। सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं खत्म कर लूँ उसके बाद पूछ लें डॉक्टर राशिद। तो सॉरी, हम वॉल्यूम और ट्रांसपोर्ट जितना जल्दी लैब पहुंचा सके तो हम पहुंचा दें। हमारी लैब और हमारे दरमियान क्लोज लाइजन होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए कि वो आपने क्या इसको रिक्वेस्ट की है। जब लैब में सैंपल आ जाए तो हमारा टेक्निकल स्टाफ उसकी बेहतर प्रोसेसिंग, मैंने बताया कि हम बहुत ज़्यादा चॉप कर देंगे, जैसे हम घर में कीमा बनाते हुए चॉप करते हैं गोश्त को, वैसे नहीं करना है हमें। उसको बहुत जो नेक्रोस्ड एरिया उसको लेके डायरेक्ट इम्बेड कर देना है, और हम प्लेटें ऐसे सेलेक्ट करें जो कि सेलेक्टिव प्लेटें हों जिसमें बैक्टीरिया की
Can anyone hear me? यस यस मैं आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर ज़ीशान की नहीं आ रही है हमें। हाँ ज़ीशान की नहीं आ रही है जरा। वदीद आप कुछ रिकनेक्ट कर रहे हैं ज़ीशान। रफीक साहब, हमारे डॉक्टर पास रफीक इज देयर? और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर और अगर मरियम ऐसे है। रफीक अनानी साहब मैडम माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, बैठे हैं। हाँ ये भी है, लेकिन ये भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इनकी आवाज नहीं आ रही। तो डॉक्टर नसलीन गुल है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, डॉक्टर मरियम है विमेन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और पैनलिस्ट यस में डॉक्टर हिना है who is also a histopathologist and डॉक्टर डॉक्टर मरियम। रफीक आर यू देयर? He is there because chat में भी उनका मैसेज आया जी था। जी 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 डॉक्टर सलमा मैं आ गया हूँ क्योंकि खान में कुछ नहीं आई डोंट नो इंटरनेट का मसला हो रहा है। कंटिन्यू कर ले जी बस मेरा खत्म कंटिन्यू हो रहा कर। है। जी 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 खत्म हो रहा है बस मेरा। That's a lovely presentation anyway. So बस लास्ट में ये कहूँगा कि provide adequate incubation condition, good quality control, acquired clinical details from the specimen, and we should develop a close liaison with the clinician. So it's a bilateral trade, हमें इसको दोनों को maintain करना है. I'm sorry ये interruption बहुत ज़्यादा हुई है, but I have finished now. I'm open for question and answer. Sir Rashid, Dr. Rashid, please, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर ज़ीशान बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, तकरीबन सारी एस्पेक्ट्स कवर हो गई। यहाँ पे एंटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैसे भी बैठे हैं वो भी बताएं और आप भी बताएंगे कि ईयर में फंगल इन्फेक्शन आ देयर, तो कब ये हम सस्पेक्ट करें कि अगर ईयर में फंगल इन्फेक्शन है तो उसको हम लेबोरेटरी जो भिजवाते हैं टेस्ट के लिए, वहाँ पे क्या टेस्ट का क्या किया जाता है, व्हाट शुड बी राइट कि इस पे क्या टेस्ट करना है, तो ये जरा हमें बता देंगे ईयर इन्फेक्शन किस में। सो डॉक्टर राशिद, एक तो सिंपल हमें लिखना है फंगल कल्चर। आप स्पेसिमेन किस तरह भेज रहे हैं ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो स्वाब होगा, तो स्वाब में यील्ड इतनी अच्छी नहीं होती है। हम स्वाब नहीं, अगर आप स्वाब ले रहे हैं तो हमें प्लीज जरूर लिख के भेजें जैसे स्वाब बट हाई। सो हम फिर फंगल को जरूर देखेंगे इसमें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसको कहीं आप जो पर ऑपरेटिव सैंपल ले रहे हैं तो पर ऑपरेटिव सैंपल भी हमें तो लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ फंगल कल्चर आपने लिखना है। एंड जब आप फंगल कल्चर लिख देंगे तो बाकी काम हमारा है सारा ना। लेकिन स्पेसिमेन आपकी कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने स्पेसिमेन कौन सा भेज रहे हैं। अगर आप डीप इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप एस्पिरेट लेके भेज रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। तो इसमें हमें फंगस की टाइप भी आ जाएगी कि जी कौन सा श्योर, फंगस है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग इसमें बिल्कुल जरूर आपको बताएंगे कि फंगल कल्चर में कौन सी एस्परजिलस है, कैंडिडा है, म्यूकोर है, कौन सी चीज है। हम अगर कैंडिडा है तो उसकी सेंसिटिविटी बता सकते हैं आपको, बट फॉर म्यूकोर सो वी हैव नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर फंगस लाइक एस्परजिलस एंड म्यूकोर अपनी सेंसिटिविटी, सो वो हम आपको नहीं बता पाएंगे। चलिए ठीक है, जी थैंक यू। डॉक्टर कैसर जी। यस ज़ीशान, थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत शॉर्ट टाइम पे इसको हमारी इस इनविटेशन को कबूल किया। आई एम रियली ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एंड मी पर्सनली शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत शॉर्ट टाइम पे ये प्रेजेंटेशन तैयार की और प्रेजेंट किया, बहुत जो विच इज वेरी एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये बता दें, एक तो ये कि आपका जो पहली स्लाइड थी उसमें साइट पे साइनस का, पीएनएस का कोई जिक्र नहीं था कि पीएनएस में बड़ा कॉमन होता है फंगल, खासकर पॉलिप फंगल पॉलीपॉइडल मास बहुत होते हैं हमारा। तो लोगों को जो पार्टिसिपेंट है इनको बताने के लिए अगर कोई है तो वो नेजल पॉलिप जब हम रिमूव कर लेते हैं मैक्सिलरी से, पर्टिकुलरली क्या कहते हैं इथमोइड से, बाज दफा स्फेनोइड साइनस में भी होता है, फ्रंटल में भी होता है, तो वहां से निकालने के बाद हमें पता चल जाता है ड्यूरिंग सर्जरी कि ये इसमें फंगस है, तो उसको किस तरीके से भेजना चाहिए। हमारी मेरे ख्याल में पार्टिसिपेंट्स में कुछ ट्रेनिंग भी है यहाँ पे, तो उनको भी पता चल जाएगा। सो सर दो चीजें, ये स्लाइड थी हमारी फंगल राइनोसाइनोसाइटिस की। सो अगर इस तरह के पॉलिप है जैसे फॉर एग्जांपल, सो पॉलिप हमें जब हम निकाल रहे हैं तो इफ यू वांट टू डू हिस्टोपैथोलॉजी तो हिस्टोपैथोलॉजी जाएगा उसके अंदर
नहीं, हिस्टोपैथोलॉजी में तो हम फॉर्मेलिन में डाल के भेजते हैं, लेकिन जो माइक्रोबायोलॉजी भेजने हैं वो हमें स्टेराइल सिलाइन में भेजना है विद इन स्टेराइल कंटेनर। सो आपको कहीं भी किसी भी लैब से आप स्टेराइल कंटेनर आपको मिल सकता है, एंड स्टेराइल ब्लू टॉप या रेड टॉप जो भी होगा उसमें स्टेराइल सिलाइन, एक खुली हुई बोतल को ना करें, क्योंकि हमारे अक्सर हमारी एक्सपीरियंस ये है कि खुली हुई बोतल्स होती हैं जो स्टेराइल नहीं होती हैं उसमें। तो नॉर्मल सिलाइन में, सिंपल जो नॉर्मल सिलाइन है उसके अंदर आप भेज दें, सिंपल नॉर्मल सिलाइन में इसको भेज दें, और जो अगर आपको नेक्रोज्ड एरिया लग रहा है और उस पर लिख दें कि फंगल पॉलिप है ना, सो हम उसमें नेक्रोज्ड एरिया जो भी होगा या जो थोड़ा सा हमें लगेगा फंगल इन्फेक्शन, उसको हम उस हिसाब से प्रोसेस कर लेंगे। सो दो चीजें करनी है, स्टेराइल सिलाइन एंड स्टेराइल कंटेनर, बस। थैंक यू सर रफीक आप कुछ कह रहे थे सर? जी जी जी, अगर इजाजत हो तो। जी सर, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, लेकिन आप मैं It was a very nice, and state of art presentation, and I acknowledge and appreciate the efforts of the Dr. Sajjad Qazi Wasik Saab and Dr. Professor Sulma Kundi for webinars participants. Pediatric fungal infections are also a very major part of fungal infections since birth. तो आपने pediatrics का segment बिल्कुल भी cover नहीं किया इसमें. जी, Can we have a pediatrics and other webinar on pediatric fungal infections? जी सर, हो तो सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने एक जनरल टॉपिक कवर कर रहा था, तो इसमें जो हमें ज्यादा पीडियाट्रिक में जो हम लोग देखते हैं, जैसे स्पेशली एनआईसीयू में और न्यूनेट्स में, वहाँ जो कैंडिडा इन्फेक्शंस हैं वो हम ज्यादा देखते हैं। कैंडिडा इन्फेक्शंस हैं और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, कैंडिडीमिया। सो ऑब्वियसली उसके लिए हमारी ब्लड कल्चर्स हमें भेजने हैं, और ब्लड कल्चर्स की यील्ड के लिए हम अपनी लैब को जरूर इंटीमेट करें कि अगर इफ यू आर सस्पेक्टिंग फंगल इन्फेक्शन, सो हम उसकी यील्ड को बेहतर करने के लिए हम उसको 7 से 21 दिन तक, लिटरेचर में लिखा है कि समटाइम्स इट ग्रो आफ्टर 5 days, सो हम लैब को इंटीमेट कर दें कि हमें 7 दिन से 21 दिन तक इस बॉटल को इंक्यूबेट करें। वरना अदरवाइज लैब्स क्या करती हैं, अगर ऑटोमेटेड सिस्टम है तो मैक्सिमम 7 days तक रखती हैं या 5 days तक रखती हैं, और उसके बाद डिस्कार्ड कर देती हैं इस बॉटल को ना। हमारी प्रैक्टिस भी है। लेकिन अगर हम फंगल इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो भी हम जो सिस्टम में इस तरह की उसको इंक्यूबेशन टाइम को बढ़ा देते हैं 21 दिन तक ना। सो एक जो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन जो बच्चों में कैंडिडीमिया, उसके लिए तो ये है कि आप ब्लड कल्चर्स भेजें, एंड ब्लड कल्चर्स की इंक्यूबेशन को हम बढ़ा देते हैं। तो ये है। इसके अलावा ऑब्वियसली यू आर राइट कि हम इसको और भी जो इन्फेक्शन है उसको हम डिफरेंट तरीके से, वो अगेन अ होल एंटायरली वास्ट टॉपिक। सो कभी मौका लगा तो इंशाल्लाह उसको भी हम कर लेंगे कवर। एस्परजिलोसिस के क्या चांसेस हैं? जो हमारे पास बच्चे नमूनिया के आते हैं उसमें एस्परजिलोसिस इन्फेक्शन के कितने चांसेस? सो सर, इट डिपेंड्स कि वो उसकी अंडरलाइंग डिजीज क्या सी है। अगर वो अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, इम्यूनो सप्रेस्ड है, देयर इज अ हाई चांस के, क्योंकि एनवायरनमेंट में तो है हमारे पास ना, तो देयर इज अ हाई चांस कि हम उसको देयर इज अ एस्परजिलस इन्फेक्शन। सो इट डिपेंड्स कि कौन सी सिचुएशन है, बट ऑब्वियसली बड़ों में ज्यादा चांस होता है क्योंकि उनका एक्सपोजर भी ज्यादा होता है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर ज्यादा होता है। सो बच्चों में है विद इम्यूनो सप्रेस्ड एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पॉपुलेशन ज्यादा है। अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ पे सर एक सवाल से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं, डॉक्टर हिना और डॉक्टर मरियम। डॉक्टर हिना, कैन यू अपडेट? डॉक्टर हिना और जी जी, डॉक्टर मरियम, डॉक्टर हिना मौजूद है? अपना माइक अनम्यूट करें अपने आप को। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी सर, I am Dr. Hina, histopathologist from WMC. It was a very nice presentation. Thank you. बहुत informative और काफी कुछ सीखने को मिला। Thank you. और डॉक्टर मरियम हमारे साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। जी श्योर। वो कुछ कहना चाहिए? जी प्लीज डॉक्टर मरियम, आपका कोई अगर क्वेरीज हैं तो हम आई कैन सॉल्व द क्वेरीज।
डॉक्टर मरियम अनम्यूट करें, अपने आप को अनम्यूट करें। डॉक्टर मरियम रियाज, अपने आप को अनम्यूट करें जी। मेरे ख्याल में वहाँ भी नेट इश्यूज होंगे। मे बी Anyway, इंटरनेट इशू है उनका। डॉक्टर नसरीन है, लेकिन उनकी भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, लेकिन उनका भी माइक का साइन नहीं है, so I don't know whether she can respond or not. But I'm very grateful to Dr. Umar Ali, who is the president of Pakistan Physiological Society, principal of a very renowned medical college. And he's been chatting with us. He really liked your webinar, Dr. Mohammed Zishan. Dr. Umar, आप कुछ बोलना पसंद करेंगे? Thank you very much, Dr. Salma. आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर जीशान, it was a very comprehensive presentation और जो case scenarios थे, they were very good. Thank you. तो मतलब probably it is recorded, but if you can share some of your scenarios so that we can teach our students so that they are taught at that level that what they have to do once they are doing the general practice. जी श्योर, नो प्रॉब्लम। ये सारे केसेस सर हमारे जनरल बहुत जो कॉमन सिनेरियोज होते हैं हमने वही उठाए थे। सो दीज आर मोस्ट कॉमन सिनेरियोज जो हम लोग हर रोज लैब में देख रहे होते हैं। The best thing what you did was you told us our mistakes, what mistakes we commit while we are sending the sample. जी बिल्कुल। And what mistakes are committed by the the lab people to misdiagnose things. I am very thankful to you. नहीं सर, हम यही होता है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे यील्ड बेहतर हो सकती है। मतलब मरीज बहुत सारे पैसे देता है, बहुत सारी चीजों में फंस जाता है आगे, और सिंपल सी इंटरवेंशन से हम उसका बहुत ज्यादा भला कर सकते हैं। मेरा तो अपना ख्याल ये है। सर एक चीज में आपने स्टार्ट में सिनेरियो जो बताया लेडी का, जिसमें आपने बताया कि जी एब्सेस थी, रिकरेंट एब्सेस थी, और उसके लिए उसमें सर थोड़ा सा मुझे हुआ कि यस सर फंगल इन्फेक्शन में भी ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है और टीबी में भी, लेकिन जब तक कंफर्म उनको कोई टीबी का फ्लू यानी केशियस नेक्रोसिस इस तरह का ना है तो कभी भी इस तरह से स्ट्रेट अवे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट डायग्नोसिस नहीं देता ट्यूबरकुलोसिस का। द डायग्नोसिस इज क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। तो उसमें फिर सर फर्दर वर्कअप उसके ऊपर और फर्दर टेस्ट करके कंफर्म किया जाता है। तो आई डोंट नो कि उन लेडी को किस तरह से जो है ना इस तरह का डायग्नोसिस दिया गया और फिर एंटी-टीबी पे उनको स्टार्ट करा दिया गया। सो मैडम वो कोई छोटा सा कोई आई मीन नॉट इट वाज शी वाज नॉट फ्रॉम द लार्ज सिटी, कोई मैं सिटी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो फिर आइडेंटिफाई हो जाएंगी। तो इट वाज फ्रॉम द स्मॉल सिटी, बट वो वहाँ पे वो जो बात हुई तो उसमें क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस ही लिखा हुआ था उसकी लेबोरेटरी हिस्टोपैथोलॉजी में। बट वो क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस को जो फिजिशियन ने देखा वो कहा कि सिर्फ मतलब जहन में हमारे सिर्फ एक ही चीज थी, टीबी। सो उसने हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस सस्पेक्टेड मे बी टीबी करके कुछ लिखा हुआ था, बट वो हमने बस इसको अज्यूम ये करके कि टीबी ही होगा एंड वी स्टार्टेड ऑन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। सो वो एक माइंडसेट होता है ना, टीबी हमारे मुल्क में टीबी सबसे कॉमन है, तो हम टीबी क्योंकि ज्यादा कॉमन है एग्जैक्टली वो फंगस को जो है वो नहीं कंसीडर कर रहे। जी एग्जैक्टली। डॉक्टर मरियम आपका भी ऑन हो गया माइक, लेकिन आवाज नहीं आ रही। मैम अब आ रही है मेरी आवाज? जी डॉक्टर मरियम आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी सर, इट वाज अ प्लेजर हियरिंग यू, और बहुत अच्छी तरह बहुत सी चीजें जो है वो रिव्यू हुई, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इट्स बेसिकली द रिस्पांसिबिलिटी लाइज बोथ ऑन द माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन एज वेल एज ऑन द क्लिनिशियंस टू प्रॉपर्ली बेसिकली इन्फॉर्म and basically label and everything should be done properly. मैं सर आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि how can you make your culture selective and keep incubated for like weeks? तो मैं थोड़ा सा इस पे आपसे कमेंट लेना चाहूँगी कि आप फंगल कल्चर्स को कैसे सेलेक्टिव बनाते हैं, यू पोर्ट पोटेशियम टैलोराइट और एंटीबैक्टीरियल्स, उस पे थोड़ा सा आप रिव्यू दें। सो दो चीज़ें, नंबर वन
एक हम प्लेट ज्यादा लगाते हैं, हम एक प्लेट नहीं लगाते। मैं आगा खान की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत है, हम प्लेटें सिंगल प्लेट पे रिलाई नहीं करते हैं, सही ना। सो देयर इज अ चांस कि हमारी एक प्लेट कंटामिनेट हो जाए एनवायरमेंटल से, तो हम दूसरी प्लेट देख लें, तीसरी प्लेट देख लें, चौथी प्लेट देख लें, पांचवी प्लेट देख लें। सो एटलीस्ट भी हम लोग 5 प्लेटें तो लगाते हैं। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर प्लेसेस बिकॉज वेरी एक्सपेंसिव, नंबर 1। नंबर 2, हम जो कर सकते हैं कि हम उसकी जो माइकोसिल है या इस तरह की चीजें जिसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं ना, जो ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं क्लोरोफेनिकॉल के साथ, या जो कमर्शियली अवेलेबल है सारी, हम वो यूज कर सकते हैं, नंबर 2। नंबर 3 क्या करते हैं कि हम उसको जो मीडिया की थिकनेस है ना, वो इतनी रखते हैं कि ये ना हो कि वो 4 हफ्ते के अंदर या 6 हफ्ते के अंदर वो डिहाइड्रेट हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि उसके इंक्यूबेटर का टेम्परेचर इस तरह मेंटेन रखते हैं, प्लस जो उसकी प्लेटें हैं ना, उसको रिम कॉम, जो वो सेलोफेन ट्यूब्स होती हैं, वो सेलोफेन टेप्स होते हैं, उससे हम उसको ना बांध देते हैं ताकि वो एटमॉस्फेरिक से वो डिहाइड्रेट ना हो जाए। नंबर 4 हम ये करते हैं कि हम उसको डेली देखते हैं। अगर जरा सी भी कोई कॉलोनीज आ रही हैं तो हम उसको आइसोलेट कर लेते हैं। ये ना हो कि वो अगले दिन देखें वो डिहाइड्रेटेड हो, ग्रो ना करे, उस पर ओवर ग्रो कर जाए, दूसरे सेप्रोफाइट्स हैं वो ग्रो कर जाएं। सो 3-4 चीजें करनी है आपने। अगर आप बहुत ज्यादा प्लेटें नहीं लगा सकती तो आप एक सेलेक्टिव प्लेट लगाएं जिसमें एंटीबायोटिक हो, जो कमर्शियली अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2, उसको आप इंक्यूबेटर में जब रखती हैं तो टेप लगा दें उसकी रिम पे, ताकि वो बिल्कुल सील हो जाए, सही ना। नंबर 3, आप उसको रेगुलरली देखें। रेगुलरली से मुराद है डेली देखें। जब डेली देखेंगे तो आपको सिंगल कॉलोनी भी नजर आ रही होगी ना, आप उसको पिक करके दूसरी प्लेट में लगा लेंगे, ताकि वो आपको लगेगा कि यार कोई ओवर ग्रो ना कर जाए कोई और चीज है इसके अंदर। तो ये मेरा था। थैंक यू, वेरी इंफॉर्मेटिव। जी मुलाजिम साहब, लेट्स वाइंड इट आई थिंक। किसी और के क्वेश्चंस हैं जी? हेलो, आई थिंक डॉक्टर मुलाजिम है नहीं। मेरे ख्याल में मैडम क्लोज कर दें। डॉक्टर सलमा आप प्लीज। On behalf of Pakistan Medical Association, the Pakistan Physiological Society, Women Medical College, and Azad Kashmir Medical College, Muzaffarabad, I really thank Dr. Mohammed Zishan. It was such an informative webinar. Being a physiologist, I went back into pathology and I learned a lot. Thank you, Dr. Zishan, शुक्रिया, and we hope to have you on such webinars a few more times. इंशाल्लाह। To all the participants who took out their time, especially to Dr. Kesar Sajjad, Dr. Qazi Wasik, Dr. Mulazim, who are always there arranging this with us. And to all the participants, Dr. Shafiq, Dr. Tashfin, Hassan Islam, the panelists, Hena, Dr. Maryam, Professor Rashid, Dr. Umar Ali, and dear Dr. Nasreen Gul, and a few doctors who left, like Dr. Sultana Burlas, Dr. Nevo, and Dr. What is his name? Dr. Hassan. Have a very good day, and I hope you keep on sending good cultures which give good yields. And if there are fungal infection, the patient is treated properly. Allah bless you all. Thank you so much. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। ओके कैसा सजाद? कैसे हैं आप? ठीक हैं मुलाजिम साहब? Thank you so much for arranging this seminar. Inshallah, meet you next week. ओके, इंशाल्लाह।